Hello everyone, welcome to Odisha S. Actually, today I'm going to discuss the questions coming in GS2. That is the questions related to Indian polity. ठीक है, Indian polity रे कौन questions आसे we will discuss. At least last 3 years को हमें टिके postmortem करिया how they're asking questions को field रो आस्ची, so that we can decode something that what we can expect this year means. ठीक ଅଛି, so I'm not going to waste any time further. এটা ଥିଲା last year paper जोटा कि almost 6 to 7 months back held ହେଇଥିଲା, right? So let me choose the pen color first. Since this is 2024 paper, ठीक ଅଛି, 2024 paper ଆସିଥିଲା, 2023-24 paper ଆସିଥିଲା 7 months back ହେଇଥିଲା, ठीक ଅଛି। so ଏଠି କଣ ଆସୁଛି, first question देखो, discuss the nature and problem of coalition governments in India. Analyze the challenge of coalition politics in Indian federal system. Actually, मुझे कही परिवी, it is related to the recent current affairs development. 2024 elections से इतला, right? 2024 elections से इतला. Again, BJP government came to the power, but this time there was something different. Kaiki? This time BJP was reduced to 240, though it was enough for the mandate because coalition government अछि, right? Actually कौन इतला 2014 to 2024 ना, so coalition government रे किसी सीन ही नथिला, खाली जूनियर पार्टनर्स हिसाब से थिला. बिफोर 2014 जो सीन थिला सेतोल coalition government रे कॉन्सेप्ट बहुत उजागर हेतला because Congress was unable to form the majority, so तांग पई coalition partners होबा थिला, सेते पे 2024 एक क्वेश्चन ओके देथिला, right? So I can say this is almost static plus current affairs काहे कि Indian federal system ऊपर क्वेश्चंस आछी, नेचर कोन अछि, so almost it is static as well as current affairs part, ठीक अछि। The second question, it is talking about the SIR roles in strategic exercise by the ECI, examining the statement in the context of significance and challenges. गोटे जिंस लाकी this is purely current affairs, right? Purely current affairs. आ गोटे कथा लाकी actually SIR सब बेले न्यूज रे अछि, SIR is always in news कहीं तुम देखुथबो एबे तुम घरे पाखरे भी एनुमरेशन फॉर्म आस्तबो, एबे ओडिसा रे भी चलछि SIR एनुमरेशन फॉर्म आस्तबो, एंड गोटे जिंस लाकी SIR फॉर्म इज वेरी डिफिकल्ट टू फिल अप. एवरेज पर्सन कैन फिल, बट दितिन थोड़ा डाउट भी आसबो से फॉर्म जदि तम ना थबो ना, तुम ना जदि तुम ना पर गोटे फॉर्म आस्तबो ना, यू हैव टू फिल your grandfather grandparents name, बुझी पारछो, even परदादा भी लिखे पड़िबो in some cases, because it is there to detect the fraudulent voters, right? Fraudulent voters, ସେଥିପାଇଁ almost 9 million voters are in doubt in West Bengal, and this is always in news. SIR upper question आछी, maybe they can change the context of SIR. एबे ओडिसा रे SIR चलछि, ओडिसा SIR related भी कुछ क्वेश्चंस as per, so you have to remember this. कौन फॉर्म 6 हेगला, 7 हेगला, 8 हेगला, ये तीनटा फॉर्म तो जानिया को पड़िबो, बुझी पाछो, एडिशन डिलीशन, तापरे कौन रेक्टिफिकेशन, एपिक नंबर रेक्टिफिकेशन, ए सब जिंस यू नीड टू नो. तापरे 2000 सेम ईयर रे देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, काहे कि दिस इज आल्सो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स प्लस कॉन्स्टिट्यूशन. काहे कि आसला 2024 रे 2025 नवंबर रे 2025 एप्रिल रे कौन हेतला, सुप्रीम कोर्ट थिला ना, they started setting the timeline for governor and president to ascend the bill ପାଇଁ जो बिल को सहमति दबार अछि तापे से टाइमलाइन तक इश्यू करले, बुझी पाछो. तो नवंबर मास रे 143 यूज करिकरे प्रेसिडेंट पचारला टू गेट द क्लैरिटी. I mean, are you really authorized to give me that timeline? तापरे परे around परे सुप्रीम कोर्ट कहले no we are not at all authorized, but जते जल्दी बिल को असेंट मिलले भलो, but we are not at all authorized to give you timelines.
so it was on the basis of presidential reference ठीक अछि तापर फोर्थ क्वेश्चन कोन थिला this is discuss a statement in the light of karma yogi mission it is like मु कोइ परिबी गवर्नेंस पार्ट this is purely governance part civil service reforms को नेकरी क्वेश्चंस आछे राइट तापर I don't know why this question is there environmental justice in India is feasible ठीक है कोन की एटा हमर एनवायरनमेंट क्वेश्चन आसे कथा बट हां they have framed it to the polity part NJT मु कोइ भी environment plus policy public policy as per you right तापर what structural changes are required to address to achieve the Vikasit Odisha for Vikasit Bharat as per the vision document of the government obviously देखो नुआ गवर्नमेंट आसी आस्तेला 2024 रे सो तांकर प्लान कोन अछि राइट बुझि पाछ 2036 रे कोन प्लान अछि 2047 रे कोन प्लान अछि यू कैन राइट सम पॉइंट्स से हिसाब रे समय क्वेश्चन फ्रेम करते ठीक अछि सो इट वाज प्योरली ओडिसा पार्ट तापर the role of finance commission in upholding fiscal federalism is important देखो गोटे जिंस लेना finance commission 16th finance commission is very important थैंक यू इसे most important point कौन था 3% of GDP GSDP और 3.5% of GDP कौन 2030-31 target set cost मतलब fiscal deficit I'm talking about fiscal deficit most important one of the important highlights ता भितरे से माने एबे कोन परफॉर्मेंस टू जीडीपी रे इंडिकेटर आनी छ परफॉर्मेंस टू जीडीपी इंडिकेटर तो नुवा ना इंडिकेटर से ता भितरे पूरे दे छ बुझि पारो टू होल्ड द फिस्कल फेडरलिज्म तापरे इनकम कोन थिला आउट पॉइंट थिला कि इनकम इनइक्वालिटी बोले इनकम इनइक्वालिटी रे परसेंटेज से माने कम कर दे छ अराउंड 2.5% दे हैव डिक्रीज्ड सो हिसाब रे इट वाज वेरी इंपोर्टेंट टू नो कि 16th फाइनेंस कमीशन तार जो कौन तार जो सेइंग्स अछि वैल्यूज अछि इट इज बीन स्टार्टिंग फ्रॉम द 2026 अप्रैल 1st तार जहां सब माने गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस सो दैट रिकमेंडेशंस केबे टू स्टार्ट होछ 2026 अप्रैल 1st टू स्टार्ट होछ सो यू नीड टू स्टडी अबाउट दैट 16th फाइनेंस कमीशन तापर आउडा कथा ले ओडिसा रा फाइनेंस कमीशन रिसेंटली अपॉइंटमेंट हेतला गोटे जिंस प्रॉब्लम है कि फाइनेंस कोना कोन फाइनेंस कमीशन रो जो रिपोर्ट हुए पार्लियामेंट रे सबवेल टेबल हुए पार्लियामेंट इट इज टेबल्ड इन पार्लियामेंट किंतु स्टेट रो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट केबे टेबल हुए बुझे पाटो तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम है ना बट हां दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट न्यूज़ एंड आई कैन नॉट मु एटा रूल आउट करि परिबिन कि ए वर्ष पचारि पारे ठीक अछि तो आउट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी गोटे जिंस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड public morality both are different right I mean तुम ethics of constitution को जदि follow करछो you are upholding the morality of the constitution so तापर भी it is like जे PSR student हितबो ना they could easily answer this question I mean you have to give some quote दिले तुम जानि परिबो बुझबा तो एटा टिके कोन ethics ऊपर क्वेश्चन आसे जायथि even एडी जुडिशरी को भी ऐड कर दैछ कोन discuss a few landmark judgments of the Supreme Court and constitutional morality within the judgment also you can add ठीक है I won't go to the judgment part but because I just want to say you the nature of the GS2 ठीक है तापर CAG ऊपर क्वेश्चन आस्ती I mean it was a direct कोन constitutional body ऊपर direct constitutional body ऊपर क्वेश्चन आस्ती बुझि पाछो तो what are the constitutional safeguards of the CAG माने मु कोइ पर भी CAG रा काम it's a postmortem CAG is a postmortem body सब जिंस हला परे जाइकरी CAG ता रिपोर्ट दिए बिफोर माने बिफोर किछ रिपोर्ट दिए इट्स ऑलवेज कोन हेछि ता ऊपर रिपोर्ट दे सो इट्स अ पोस्टमॉर्टम कमेंट तापर CAG कोन एन्जॉय करछि CAG रो CAG जे होल्ड करछन तांको रैंक कोन अछि से जिंस को नेकरी किछ माने यू कैन राइट सम आंसर्स काहे बिकॉज़ ऑफ द CAG रिपोर्ट 2013-14 रे रेवोल्यूशन हे जातला 2G scam 3G scam coal block allocation scam which part Colgate scam so CAG is a very important part for ensuring effective governance actually it is a weapon of opposition so what has been the development index of women in Odisha what have been the most successful it purely Odisha part social justice this is social justice part आउडा हला कि क्वेश्चन वुमन ऑपरे वुमन सेंट्रिक क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो बुझि पारो
तापर डिस्कस द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बॉन्डेड लेबर इन ओडिशा माने बॉन्डेड लेबर कौन कहते इट्स अ फोर्स लेबर forced labor where a person works to repay its debt where a person works to repay its debt which part due to coercion and what it violates article 23 so I mean what are the bottlenecks माने हमर कोन बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट अछि बुझी पाठ एक्ट को हमें बहुत सदृढ़ करनु ओडिसा रा कोन दादन एक्ट अछि ओटे राइट तापर अमेंडमेंट्स केते तोरा हेजी सेटा तुमको देखा पड़ो बुझी पार्छ तापर इंटरस्टेट माइग्रेशन को नेकरी कौन कौन प्रोविजंस अच्छी बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट रे दादन एक्ट रे से जिंसो से इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्चुअली कौन कि ए सब जैसे इंटरस्टेट माइग्रेशन हुए ना जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना दे आर सपोज टू कौन दे सपोज टू एनरोल द नेम्स टू द गवर्नमेंट जो बही देबे गवर्नमेंट जो डेटा देबे तांकर जो जेतक सब वर्कर जिबे ना तांको ना ओडे एनरोल करिया कथा बुझी पाठ सर ठीक से एनरोलमेंट हे परनु तेते पई अब्यूज हे जाउची आर्टिकल 23 रो वायलेशन हे जाउची सो व्हाट दिस इज आल्सो लाइक कोन सोशल जस्टिस पार्ट में कहि परिबी बुझी पाठ तापर डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन बुझी पाठ तो इट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन भी अछि तो लोकल गवर्नेंस ऊपर क्वेश्चन आसीगला बिकॉज स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अर्बन लोकल बॉडीज हेगला पंचायत राज हेगला they I mean they used to conduct election for that right such a measure for its reforms लेकिन जेमती CEC रो जते पावर अछि स्टेट इलेक्शन कमीशन तो पावर नहीं कोन बुझी पड़ एनीवेज ग्रुप बी देखो ग्रुप ए रे कोन हेची इफ यू सी द ग्रुप ए ना ग्रुप ए रे the question paper contains 17 question group A 12 questions achi तो group A there is almost 150 marks group A 150 marks रो paper achi मतलब you have to attend only 10 questions out of 12 so 80 choice achi you can remove 2 questions but problem है कि 80 केते 20 question each into 5 100 marks and 80 attempt all questions so they are not giving any choices in the group B बुझी पाठ ए जिंस देछ तापर एडी देखो एक्सप्लेन द रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस व्हिच अंडरलाइन द स्ट्रांग सेंटर फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तापर व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच लेड द असेंबली मेंबर्स टू हैव ए सच फेडरल डिजाइन देखो ए टिके हिस्ट्री पार्ट हेगला बट आटम टिके कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसॉफी को जिबाक पड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मेंबर्स थिले से माने काहे की हमर फेडरलिज्म को फेडरल डिजाइन नेले दैट टू we have to say because we were getting independence from the UK तो presidential form नबा ठीक हबो कि नहीं तापर डिबेट भी हेतला मझरे बुझी पाछ तो the unanimously they passed that काहे presidential form नेले ओडे personality cult आछो but कोन parliamentary form नेले कोन be you will be what you will be legislature will be responsible to executive will be responsible to the legislature तो एटी कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पड़े आ भितर कौन फेडरलिज्म भी पड़े स्ट्रांग सेंटर तापर फेडरलिज्म आसीगला सेंटर और स्टेट भितर इलेक्शन दरकार अछि बुझी पाछ सो यू हैव टू रीड मेनी पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काहे की से स्टेप उडा न बुझी पाछ तापर व्हाई इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉल्ड ए लिमिटेड एंड रेस्पॉन्सिबल सेम जिंस बुझी पाछ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट because legislature is responsible to the executive is responsible to the legislature checks and balances रहता बुझी पाछ एटा पूरा कोर कॉन्स्टिट्यूशन हमर आछि बुझी पाछ कोर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आछि इफ पॉसिबल यू हैव टू आई मीन जदि तमे अंबेडकर हेगला अंबेडकर साहब हेगला या नेहरू जी हेगला इवन पटेल साहब हेगला तांकर जदि किछ कोट्स सब नै यू कैन कोट हियर टू गेट गुड मार्क्स बुझी पाछ तापर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ देखो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपोर्टेंट एटा सब बेला पचारछ ठीक अछि विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया भी पचारे विथ रेस्पेक्ट टू ओडिसा भी पचारछ एथर से माने ओडिसा रिलेटेड पचार देते राइट ओडिसा आई मीन मु कहि परिबे ओडिसा वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट हु गिव 33% वुमेन रिजर्वेशन ताको देखि कि पर सेंटर तक अडॉप्ट करला बुझी पाछ माने तो इट इज अ पार्ट ऑफ
कोन वेलफेयर नहीं हाँ प्योर एटा प्योर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट राइट तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है विथ स्पेशल रेफरेंस टू ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत सिग्निफिकेंस कोन अछि ए जिनसटा से पचार बुझी पाठ तो आम जानिछो गांधी जी जे कहते ना जदि तुमको स्वरा जानियार अछि ना तुम कौन कर तुमको पंचायत राज इंस्टीट्यूट माने तुमको हम जो विलेज विलेज गवर्नेंस बढ़ाई पड़ी गांधी जी से कहते तो यू हैव टू डेवलप ग्राम पंचायत से हिसाब बट आउ गोटे डिबेट थला कि हम जो अंबेडकर जी कहते से कौन कहते विलेज इज द हब ऑफ इग्नोरेंस इट इज द हब ऑफ इग्नोरेंस देन ताको सत्ता दबा ताको गवर्नेंस पे रेस्पॉन्सिबल करबा दैट इज नॉट एट ऑल a good solution सेट एबे भी कास्टिज्म है बुझी पाठ एक से एटा ए आंसर न लगी पारे बट आगु जदी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन किति हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पचाले तो मी कैन राइट ऑल दिस राइट तापर examine the significance of cash transfer schemes in India bring out its positive and negative effect देखो cash transfer schemes have positive and negative effects काहे कि एबे कोन लाडली बहना हेगला सुभद्रा योजना हेगला these are flagship schemes of ruling party even opposition party is doing that opposition party जो तांकर गवर्नमेंट अछि like कर्नाटका हेगला हिमाचल प्रदेश हेगला they are also doing that everybody is doing this cash transfer schemes thank you because जेमिति पब्लिक सेमिति नेता राइट सो एडा मु कहि परे वेलफेयर गवर्नमेंट पार्ट वेलफेयर गवर्नेंस ऊपर आस्ट ए क्वेश्चन तबर आउट असला कि डिजिटल माने एडा कोन ई गवर्नेंस पार्ट मुझे पता digital exclusion is a reality depriving many from the fruits of governance kind of e governance part आसीला तो एडी में मोस्टली कोई भी ए जो पेपर था ना इनफॉरमेशन बेस्ड थिला एक गोटे इनफॉरमेशन बेस्ड थिला तापर करंट अफेयर्स बेस्ड थिला इवन दे हैव टच द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आल्सो तो मोस्ट इंपोर्टेंट फेडरलिज्म तो सेमन पचार छंदु पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज देयर आस्किंग थिला दे आर आस्किंग एटा सब बेले भूल काहे कि मैं प्रूफ भी कर दूं ठीक है लास्ट ईयर में इमती पचार छंदु ता पूर्व वर्ष इमती पचार छंदु बुझी पाछो आ गुड हला कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हेगल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रहिबो ही रहिबो you cannot ignore this electoral reforms thank you SIR मुझे पता तापर representation of people's act approach 1950 1951 you have to study that so this is the last paper ता पूर्व वर्ष पेपर टा केम let me see this yes ha this is a 2024 जो मैं attempt करथले that OCS कोन 2022 23 मुझे पता it is there here এটা 22 23 है ना मुझे जानी चाहिए कौन था फर्स्ट क्वेश्चन देखो okay candidates to attempt 10 questions within word limit of 250 each question carries 15 minutes मतलब 15 into 10 150 10टा क्वेश्चन तुम करिया को पड़िबो ठीक अछि एडी कोन थले ग्रुप ए रे 12 क्वेश्चन देछि माने ग्रुप ए रे इते 12टा क्वेश्चन अछि देछि ता बे तुमको 10टा क्वेश्चन करिया को पड़िबो एंड ग्रुप बे 5 क्वेश्चंस आर कंपलसरी जोडे कि 20 मार्क्स है ठीक अछि सो एडी क्वेश्चन कोन थिला व्हाइल सेलिब्रेटिंग 75 years of Indian constitution 75 years काहे the woman in 9 years साड़ी तो it was related to the first constitutional amendment act मुझे पता एटा it was based on constitutional history first constitutional amendment act हेतला triggering some of the fundamental rights मुझे पता एटा थला चंपाकम दोराई राजन केस थिला एटा I don't know how many of you have attended एटा मु तो देखलु जानि परतले हां माने गोटे आईडिया आस जेतला काहे जे पीएसआर वाला थे ना से जानि छन शी वाज अ लेडी चंपाकम दोराई राजन वाज अ लेडी पढ़ी थे केतले भी तो पढ़ तो हियर इट इज थिंग एलुसिडेट द केस ये केस ऊपर तुम कहया को पड़ी काहे के आस्तला ऑब्वियसली मद्रास प्रेसिडेंसी रे प्रॉब्लम थिला तो आई मीन दे वर फॉलोइंग द डीपीएसपी ठीक है डीपीएसपी को फॉलो करथिले राइट तो जे लोअर कास्ट वाला थिले तांको सीट रिजर्व करि देथिले से तो रिजर्वेशन पॉलिसी में थिला न थिला तापर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आसला आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 ऊपर अमेंडमेंट हला देन मेनी ऑफ द आर्टिकल इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन
सेम द क्वेश्चन पळे आस्ता बुझि पाठ तापरे आ गोटे क्वेश्चन कोन आसला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बुझि पाठ सो फेडरलिज्म इज अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग डज इट एग्जिस्ट इन इंडिया यस इट एग्जिस्ट इन इंडिया बुझि पाठ सेंटर स्टेट भितरे फेडरलिज्म थाए कहीं गोटे जिनस कि विदाउट सेंटर द स्टेट कांट एक्सिस्ट बुझे तुम गोटे गोटे जिनस तुम जीएसटी काउंसिल जाओ है जीएसटी काउंसिल रे आई थिंक 67% है सेंटर से थाए बुझी पार्छ तुम जीएसटी काउंसिल ऑपरेटिव पढ़िबो तार जो गवर्नेंस अछि जीएसटी काउंसिल जो गवर्नेंस अछि हाउ इट अफेक्टिंग द मतलब से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म माने जीएसटी जदी पास माने जीएसटी रे किछि जिंस जदी तुमको चेंज करार अछि ना विदाउट सेंटर अप्रूवल तुम चेंज करि परिबो सेंटर बहुत माने वेटेज थाए बुझी पार्छ तापर स्टेट भी ते कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को है ना तो सम स्टेट्स अक्यूज द सेंटर दैट तुम सरकार जो स्टेट रे अछि तुम सेठी बहुत प्रोजेक्ट्स आनुछ बुझी पार्छ सेमिति भी अक्यूजमेंट था हुए तो फेडरलिज्म इज वेरी इंपोर्टेंट तापर डिस्कस द रोल इंपैक्ट एंड चैलेंजेस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन गवर्नेंस तो एटा प्योर गवर्नेंस पार्ट and it's a political process बुझी पाछ प्रेशर ग्रुप्स केमती एक्ट करे राइट सब बड़े प्रेशर था तो जेमती फार्म प्रोटेस्ट वन ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स बुझी पाछ सेति बाय तो फार्म लॉस विड्रॉ हेतला से टाइम रे तापरे एडा कोन थिला व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन सो गोटे जिंस होला कि इफ दे आर आस्किंग सच क्वेश्चन देन तुमको पढ़े पड़े you have to माने कोन टिके भीतर को जिया पड़ियो इंडिया और फ्रेंच भीतर केमते अछि इंडिया कनाडा भीतर केमते अछि इंडिया बांग्लादेश भीतर केमते मोर इंपोर्टेंट इंडिया एंड यूएस रे केमते अछि कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस बुझि पालो इवन इंडिया एंड यूके भी केमते अछि तो एटलीस्ट किछि 4-5 कंट्री हला यू हैव टू नो बुझि पालो दि 10 मार्क आछन दि 10 मार्क्स क्वेश्चन आछली 1 और 1.5 पेजेस तुम लिखिया सक्षम होबा कथा बुझि पालो आपको मते कॉम्पिटिटिव कॉन्स्टिट्यूशन कथा कोन तो एटा तो प्योर एटा कोन एटा ए जो क्वेश्चन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एटा तो पूरा हम कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट माने एटा लॉ एंड जुडिशरी को नेकी आसीजिबो ए क्वेश्चन हम जान छु प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तापर जजमेंट आसला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड हम जान छु एटा यूके रे आछि काई कि जेहेतु एटा मेंशन अछि so we have directly taken it from the UK and due process of law USA एठी कोन जुडिशरी चेक्स द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को चेक करंती काहे कि से माने लॉ को ठीक से फॉलो करछंती कि नाही बस लॉ को फॉलो कर किंतु ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंटेंट तमे गोटे लॉ आनिछ ना तार कंटेंट को भी से चेक कर परिबे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ we know the two landmark judgment कोडा मेनका गांधी केस जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इवॉल्वमेंट इज इवोल्यूशन हला इंडिया रे राइट सो दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा डायरेक्ट क्वेश्चन थला तो लिखा भलो भी लागु तो बुझि पारो एटा पीएसआर रे भी तो भल से पढनते ए सब जिंस व्हाट तो एटा कोन आसीगला एटा इस इश्यू प्रोजेक्ट ओडिसा इट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन सेक्टर है ना एलिमेंटरी स्कूल ऊपर कौन कौन गवर्नेंस होउची से हिसाब रे आस्टी क्वेश्चन इस इश्यू प्रोजेक्ट ओडिसा ई गवर्नेंस ऊपर आस्टी क्वेश्चन तापर एक्सप्लेन द रोल स्टेटस ऑफ वुमेन देखो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपोर्टेंट काहे कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज फॉर्म इन 2020 गोटे जिंस लाकी रीड अबाउट पंचायत राज एंड जो कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज देछ ना तार रिकमेंडेशन ता भी पढ़ो क्वेश्चन घूमे के आसिले भी यू कैन यूज दोस रिकमेंडेशंस इन योर आंसर एटलीस्ट आंसर विल लुक नीट एंड क्लीन बुझी पाछ तो एठी कोन हेगा वुमन आसीगला तो सोशल जस्टिस पार्ट भी आसीगला राइट तापर पंचायत राज आसीगा लोकल गवर्नेंस पार्ट भी आसीगला एंड इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओडिशा तो देखो ओडिशा स्टेट कंटिन्यूज टू हैव अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स विथ आंध्र प्रदेश सो एटा कोन इंटरस्टेट रिलेशन ठीक अच्छे कोटिया को नहीं गोटे आउ गोटे जिनस है कि जो ममता बनर्जी पावर थिला
तो टिके प्रॉब्लम थिला कोडा धाम को लेके से दीघार गोटे जगन्नाथ धाम करथिला भी नो चारटा ही धाम अछि जोटा कि पुरी पुरी भगवान मंदिर जगन्नाथ मंदिर अछि सेटा वन ऑफ द प्योरेस्ट धाम तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी करथिले के ममता बनर्जी एंड ताकू शुभेंदु सरकार ताकू अंडू कर दैछन राइट सो ऑलरेडी बे रिजॉल्व तो हे गेलान तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट କଥା କହୁଛି है ना एटा तो आंध्र प्रदेश में थिला से कोटिया तो अनरिजॉल्व हे रहिला बट ए जो धाम को नेकी कंट्रोवर्सी हेतला ओडिसा वेस्ट बंगाल तापरे किछि वर्ष तळे आमो बीच को से माने कोन ट्रांसग्रेस कर जेथिले जैसे बॉर्डर से माने बॉर्डर फेंसिंग करथिले तो आमो बीच को ऊपर से पळे आस्ते तापरे ओडिसा रे जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट अछि सेठी कोन बेंगोली लैंग्वेज ओडिया ही कम पढौछंती बेंगोली लैंग्वेज बेसी ऊपर फोकस होउछ सी जिंस ओडे कहि परिबे तापर मोर आलू रेशियो आसके राइट तो ओडिशा बेंगल आम जानी तापर ओडिशा छत्तीसगढ़ ऑब्वियसली अपर राइपेरियन रोहे छत्तीसगढ़ महानदी को नहीं तो बेले हाइड्रोलॉजिकल डाटा दियंते बुझी पर डैम्स बनै दियं से जिंस थाए ओडिशा झारखंड ऊपर बेसी किछि नाही तो मझिरे मझिरे कोन कि कोल ऊपर डिस्प्यूट थाए राइट एनीवेज तो let us go to the next question MSMEs तो टिके एटा कोन इकोनॉमिक पार्ट पके देछन आई डोंट नो व्हाई दे डिड दिस बट लिखि पारिबो राइट तापर डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखो फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट थैंक यू फाइनेंस कमीशन जहां भी रिपोर्ट दे ऑलमोस्ट ऑल सेंटर बाइंड कर दियो माने इट इज नॉट बाइंडिंग बट सेंटर फॉलोस फाइनेंस कमीशन जहां भी कहे सेंटर तको फॉलो करे काहे कि सेंटर पाखर ऑलमोस्ट रूल बुक आसीगला देखो फाइनेंस कमीशन जे भी था ना से सेंटर को फेवर ही करते एट द सेम टाइम सेंटर मु कहबी कि मु जहा करछे एज पर द फाइनेंस कमीशन आ स्टेट चिलेले किछि हे परिबो नाही राइट तो एबेका डेट तुम एमते क्वेश्चन आसले कोन तुम रिकमेंडेशन दे परिबो 15th आउ 16th भीतर कोन कोन डिफरेंस आछि यू कैन सी दैट 15th एंड 16th भीतर से जिनसडा से कोर्स तापरे discuss the process and procedure for the appointment of chief election commissioner एटा बहुत न्यूज रे थिला बुझी पड़ो एटा बहुत न्यूज रे थिला एटा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी फोन एंड ओके एटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फोन आपन क्वेश्चन आस्ते पूर्व ईयर रे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आस्तिला एबे तुम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पचार दिस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो पचारिबे तापर on 7th May 19 देखो सुप्रीम कोर्ट इन ए फुल कोर्ट मीटिंग पास्ट रेजोल्यूशन आई डोंट नो आई मीन दिस क्वेश्चंस आर माने कोन डीम टू लीव बाउंसर क्वेश्चन टा छाडिया भी कथा आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डूएबल एक्सेप्ट दिस जे जानथो कर परिबो नॉल नाही तुम केम जानिबो जुडिशियल कंडक्ट एथिक्स रो गाइडेंस कोन थिला इवन दो यू कैन राइट एनीथिंग बट केते लिखि परिबो है ना So it was related to judiciary and ethics. Group B रे फर्स्ट पांचटा क्वेश्चन अछि कोन ओडिसा लोकायुक्त कहीं से तो ओडिसा लोकायुक्त चेयरमैन आस्तला नो तो इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लीन गवर्नेंस हाउ इट इज हैंडलिंग द करप्शन इश्यूज से कहा को ओडिसा विजिलेंस को से केमिति माने कोन रेकमेंड करंती ए सब जिंस को लिखिया पड़ी तार जुरिसडिक्शन कोन फंक्शन कोन सो इट इज काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी पार्ट बुझी पाटो तापर डिस्कस द एडवाइजरी रोल ऑफ सिविल सर्विस पॉलिसी मेकिंग so एबे गोटे क्वेश्चन है सिविल सर्विस रिफॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन आसीगला बुझी पाछ गवर्नमेंट प्लस सिविल सर्विस रिफॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन आछे तापर व्हाट इज द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट आर द एटा एक्चुअली कोन एनवायरनमेंट क्वेश्चन से माने हॉरन करे पेम द क्वेश्चन दिए दियो पॉलिटी बुझी पाछ एटा मु कहि परिबे एनवायरनमेंट प्लस कोन कहिबे डेवलपमेंट गवर्नेंस तापर analyze the powers and functions of the governor of the state in India देखो गवर्नर एंड सीएम भी सब टसल रहे बिकॉज ऑफ आर्टिकल 163 पढ़ी जो ता भीतर गोटे वर्ड छै डिस्क्रिशनरी पावर ता लिखाई छै डिस्क्रिशनरी पावर जस्ट गूगल अबाउट 163 से आर्टिकल तुमको चिपके रछ इंट्रो रे जब भी गवर्नर आसी what do you understand by the one nation one election give arguments in favor and against the government जदि तुम ठीक से पढ़तो तो कमिटी रे रिकमेंडेशन
जदि तुम ठीक से पढ़थबो देन यू कुड हैव रिटन सच क्वेश्चंस एटा रिफॉर्म्स आछे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड एटा करंट अफेयर्स पार्ट है बुझी पाछ अगेन मु एटी देखि परिबी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फेडरलिज्म बुझी पाछ इलेक्शन कमिश्नर बुझी पाछ करंट अफेयर्स से पूरा क्वेश्चन है ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स जेमिति फाइनेंस कमिशन जेमिति कि वन नेशन वन इलेक्शन बुझे आ गवर्नर तो सब बड़े ही रहे इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट एज वेल एज द करंट अफेयर्स पार्ट बुझी पाछ आउ मेन थिंग है फेडरलिज्म एंड इलेक्शन कमिशन तापरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भूली गली दिस इज वेरी इंपोर्टेंट दिस थ्री पार्ट्स बुझी पाछ लेट अस गो टू द so eta let us go to the other one के आसला 2021 22 रे आसला ए पेपर ठीक अछि सी दिस हां बट से वर्षटा मु जानि छी से वर्ष कट ऑफ थला 48 फिल्म्स रे एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन पैटर्न चेंज हेतला बट पैटर्न ते चेंज है देखो जे केम चेंजेस पॉलिटी रे समान एथिक्स रो पार्ट पर देथले explain the concept of accountability बुझी पाठ गवर्नेंस पार्ट भी एस्पेरी बट कोई पर तापरे dimensions of accountability for good governance for bad part भी कोई पर good governance देखो एटे फर्स्ट टाइम good governance फर्स्ट टाइम मेंशन हला एटा प्योरली सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके सरकारी कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशंस रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन सेंटर स्टेट आई डोंट नो हाउ रिकमेंडेशन मन से 12 मार्क रिकमेंडेशन केमिति लिखे मु भी जानि पर राइट एनीवेज है माने ऑब्वियसली इट इज सेंटर स्टेट प्लस फेडरल रिफॉर्म हम कोन फेडरलिज्म ऊपर क्वेश्चन अछि तापरे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कोन दे पर से ऊपर क्वेश्चन अछि आर्टिकल 35 ए जम्मू कश्मीर से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वाज न्यूज दैट ईयर तापरे रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस एंड डोमिसाइल लॉ दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी एज वेल एज ओपीएससी ये जो एक विधान एक प्रधान एक देश जो पोनुतला श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिस इज ऑल रिलेटेड हियर ओनली नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस से डायलॉग ए आ विधि तुम चिपके पारिबो चाहे भी चिपके पारिबो श्याम प्रसाद मुखर्जी बढ़िया मन दैट सेंटेंस वाज वेरी गुड तापरे आर्टिकल 263 ऊपर इंटरस्टेट रिलेशन पुणी इंटरस्टेट रिलेशंस ऊपर आछि तापरे एडा काइंड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंटरस्टेट काउंसिल इज लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म examine the provision of social justice as incorporated in Indian constitution law is a catalyst to reach the ladder of social justice एडा पूरा social justice रा पार्ट एटा law is a catalyst to reach the ladder of social justice lower प्राधान्य कौन अछि to get the social justice you have to quote some thinkers as well like बहुत सारे thinkers right हम ethics रे पढ़ले जानि एटा टिके काइंड ऑफ ethics टाइप हे गेला ई क्वेश्चन दा तापर ग्रुप बी रे कौन अछि legitimacy of institution and popular support are the key factors of good governance out of good governance पढाइसला so this is the second good governance I think good governance first astala see this yeah it is the second time good governance astala right sixth question so at a good governance of question asila taपर seventh question explain the salient features of good governance third time asila what are the preconditions for good governance I don't know who was setting this question he must have passed his cell by date I mean ताको क्वेश्चन बनेबार ही नथि एक्चुअली बनेबार नथि ही मस्ट शुड हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम दिस जॉब एटलीस्ट गोटे पिला जदी गुड गवर्नेंस केते लिखिबो जदी वन पर्सन इज राइटिंग अबाउट गुड गवर्नेंस ना तारा नेक्स्ट आंसर ऊपर पडिबो he might not write good answers further बुझी पड़ पुणी explain the federal form of governance पुणी फेडरलिज्म explain the issues of Indian federalism पूरा फेडरलिज्म explain the role of governors with reference to a passage of bills
what are the challenges associated with governance of its ବୁଝିପାରୁଛ ପୁଣି center state relations ବୁଝିପାରୁଛ ପୁଣି center state ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଠି governance analyze the role of government in regulating data privacy ଏବେ ବି data privacy is in news ବୁଝିପାରୁଛ data protection bill जोटा आछि प्लीज एथर एटा पढी जेबो एथर क्वेश्चंस अलगा वे रे फ्रेम हे पारे बुझिपारो तो इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस बुझिपारो तापरे power versus blurs political judgment comment on this statement the light of माने power is greater than the कोन जी बाहुबली अछि ना दे कैन ओवरटर्न एनी ऑफ द दे कैन ताको ऊपर तांकर पकड़ बेसी थाए बुझिपारो democracy governed by a dominant party appears very different from a democracy with no dominant party comment in Indian बुझिपारो माने इट्स लाइक देखो जदि हमें गोटे दबा बीजेपी और सीसी चाइना मु गोटे एनालॉजी दे यू कैन कंपेयर ऑल दिस बुझिपारो एटा प्योर डेमोक्रेसी ऊपर क्वेश्चन आछे सेकंड अभी इंडियन पॉलिटी ऊपर एक क्वेश्चन आछे trace out the causes for interstate border disputes in India discuss the issues and mechanism to resolve border issues बुझी पारो एडा भी फेडरलिज्म प्योर फेडरलिज्म ऊपर क्वेश्चन आछे बुझी पारो इंटरस्टेट रिलेशंस इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स कौन कौन अच्छे सब स्टेट रच इवन केरला कर्नाटक रे भी अछि तमिलनाडु केरला रे भी अछि ओडिशा आंध्र प्रदेश रे अछि बुझी पारो ओडिशा बेंगल रे अछि महाराष्ट्र गुजरात रे भी अछि सब स्टेट रे अछि यू हैव टू पिक सम ऑफ द कंट्रोवर्सी हमें ऑब्वियसली यदि पिक करी तो ओडिशा रे ही पिक करियो एंड आउट के भले तुम साउथ रे किछि कंट्रोवर्सी पिक करि परिबो mechanism कौन अच्छी interstate council it's a mere advisory body the recommendation binding भी नहीं issues मुझे पता so 13th question Odisha related interstate Odisha state in respect to sharing of Manadi water से टाइम रे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट stop sharing the hydrological data केते पानी छाड़ी जणा नथला केते डैम्स बनौछन्ती सीतार दौ नथला बुझी पाछ तांकर इंफॉर्मेशन दौ नथला से रिलेटेड कोनी अपर ध्याले से मैंने अपर राय पेरे न सो इट हैज एन इफेक्ट ऑन ओडिशा सो एटा वाटर गवर्नेंस अप्रोच एटा कोन स्टेट रिलेशन भीतर अछि बुझो इंटरस्टेट रिलेशंस पुणी सोशल जस्टिस plus status of woman examine the legal status of woman in the question ओटा पूछा है ना तापरे what are the constitutional provisions of social justice guaranteed in India discuss about the government of India initiative to make the गोटे जिनसा लाके DPSP अच्छी तो मैं 39B 39C सी सब आर्टिकल आप इधर कोट करी पारी आंसर्स to look more professional and technical बुझी बात that question is asked constitutional and welfare governance of the question is तापरे explain democratic decentralization local governance of the question as well एडब्ल्यूसी 73rd question पंचायत पुणी पंचायत मु देखु जे 3 इयर्स लानी पंचायत of the question आछे 3 इयर्स लानी कोन फेडरलिज्म of the question आछे 3 इयर्स लानी कि इंटरस्टेट रिलेशन of the question आछे तो it will repeat in the next year also फ्री बी कल्चर बुझी पारो ऑल द स्टेट स्कीम्स बुझी पारे इलेक्शन जीतिया को माने ऑपोजिशन एंड सेंटर कौन कौन करि पारि बुझी पारो से जिंस तो वे एटा कोइ परिबी एति कोइ परिबी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी पचारुचंती सीईसी SEC ए सब इट इज वेरी इंपोर्टेंट एटा नेक्स्ट ईयर को रिपीट हबो तुमको फॉर्म 7 रो कंट्रोवर्सी जाने को पड़िबो बुझी पारो लेट मी गो टू द अदर पेज या
ठीक अछि सो लेट अस सी दिस जेतु अच्छी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट अछि सो लेट मी टेल यू कौन कौन करंट अफेयर्स पार्ट अछि राइट दीस आर द इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पार्ट जोटा कि बना है प्लस यू हैव टू रीड एटलीस्ट तुमको जाना पड़ेगा आदर कौन कौन प्रॉब्लम है एंटी डिफेक्शन लॉ इज अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट माइट दे आस्क बुझी पाठ तापर प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी बिकेम्स इंडिया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअसली सर्विंग पीएम तापर 124 ए सेडिशन ऊपर थिला सिटीजन अमेंडमेंट रूल्स एबे चेंज हेची 131st अमेंडमेंट बिल आस्तला तापर आउट आस्तला कि रिसेंटली डिलिमिटेशन बिल आस्तला जोटा कि ऑपोजिशन डिफीट कर देते स्पेशल मेजोरिटी हिलना नहीं तापर रिमूवल ऑफ सीईसी फॉर्म 7 कंट्रोवर्सी दिस आर वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक्स जोटा कि एनीवेज टेस्ट रे मु देई देबी क्वेश्चंस थोड़ा देई देबी डोंट वरी तापर गवर्नेंस पार्ट रे कोन कोन आसीला कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ सेंटर एंड स्टेट पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस बुझी पड़ एटा एथर जस्टिस एके कमिटी तापर सेंटर टाइटन्स एफसीआरए एफसीआरए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो ठीक है सो एनीवेज we have decided that polity ର ତିନିଟା टेस्ट ତ ହବ सो आमे ऑलरेडी देई दिछु हाउ ट्रेंड केमति अछि हम जानछु इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऊपर क्वेश्चन आसीबो तापर फेडरलिज्म ऊपर क्वेश्चन आस परिबो सोशल जस्टिस ऊपर क्वेश्चन आछी वुमन इज वेरी इंपोर्टेंट तापर डिजिटल गवर्नेंस ऊपर क्वेश्चन आछी बुझी पाछ तापर फेडरलिज्म तो सेमिति भी क्वेश्चन आछी सो होलिस्टिक वे रे तुम पढ़ो राइट आउट है गवर्नर ऑफ सरकार कमिशन कौन रिकमेंडेशन करथि से जिनसे पढ़ो आर्टिकल 160 वी हैव टू पुट anyways I've given the module so परसों टेस्ट हबो please do attend the test